करते कर पाते हैं? Sure, sure. Okay. No, you are the host. जो अभी हमारी जयपुर की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सो मतलब वो क्या है? मतलब वेयर हाउस है, ऑफिस स्पेस है, कुछ आइडिया आपको उसके बारे में? अभी आप म्यूट है सर, अभी यू आर म्यूट, म्यूट है। हम्म। So it will be a warehouse. Warehouse asset. वेयर हाउस, ओके। तो फिर वेट करते हैं उसका, जब आती है उसके बाद फिर हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काफी टाइम से। ज़्यादा बड़ा एसेट नहीं है, 35-40 करोड़ का एसेट है वो। ओके। एंड क्योंकि हमारा ऑलरेडी जयपुर में हम लोग महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में एक एसेट कर चुके हैं विद द सेम टेनेंट। अच्छा, विद द सेम टेनेंट। विद द सेम टेनेंट हेवल्स ही था उसमें भी, और ये भी हेवल्स ही है। ओके ओके महिंद्रा ओके। वर्ल्ड सिटी के अंदर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त लगेगा उसको सेल आउट करने में। हम्म। और जल्दी से सेल आउट होगा तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होके फिर नया कुछ एसेट हमारे पास, वी आर इवेल्युएटिंग टू मैनी प्रपोजल्स ऑन आवर टेबल, तो देखते हैं कौन सा आने वाला है इसके बाद। ओके ओके, अमेजिंग। सो आई थिंक अब आपको स्टार्ट करना चाहिए सर, काफी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, बाकी अब स्लोली स्लोली ज्वाइन करते रहेंगे, रिकॉर्ड हो ही रहा है सेशन, सो प्लीज कंटिन्यू सर सर। पूना का कब आने वाला है सर? पुणे में सर अभी काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं पुणे के लिए भी। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस में। सो दैट्स द रीजन अभी तक हमारे पास पुणे का एसेट आया नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन अ बिगर एसेट। काफी बड़ा एसेट है जिस पे काम कर रहे हैं हम लोग, और जैसे ही आएगा वी विल लेट यू नो। Yeah, Okay. hi. This is Sundar from Bangalore. Yeah. Is it like we can bring in a proposal of a property to Strata? Definitely you It's can. about size of 500, 700 CR. So basically we are complete. So currently we are evaluating proposals like 200 crore, 300 crore, not more than that. But if you have any asset, definitely we can look upon it. Okay. So fine. Because I do have a few, which actually, as an individual, it cannot be sold. Because Right. a lot of it takes the years together to work on that. So I've given them a proposal like that. If it is possible, we can try. They said, fine, whatever way, we would like to have money converted to our Definitely. account. So you definitely can share the proposal to us, and we will go through the proposal. If we like it, definitely we can go ahead with that. So we can, launch that asset in parts. So that can be. Mhm. Right. Okay. You will break it into parts Yes. of it and then start working on it. Either we can make 2 SPVs or 3 SPVs to sell that asset. Yeah, That that's can good. be done. Yeah, that sounds good. At least the client also will be happy to see some money flowing in. Right. Yeah. Thanks. Yeah. Thank you. Is my screen visible to everyone? विजिबल सर। Okay. So, guys, I'll take you through the this corporate AMA deck, where you get to know how a startup functions, how it works, and what is the process of investment. How do we onboard the properties with us, and how the due diligence is done, how the transaction is done. Okay. So currently, as we know, the current economy of India is $3.5 trillion. If you include the NRI fund, it is approximately $5 trillion currently. And we know that people do not know where to invest their money. Most people do not know. सब लोगों को ज्यादा पता नहीं होता कि मेरा पैसा कहाँ पे सेफ है, मैं कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं. So this is the report basically where we know that people invest in concentrated assets because they feel कि ये यहाँ पे मेरा पैसा सेफ रहेगा. So they invest in gold,
jewelry, diamond, silver, FD and bonds, which does not give you more than 5.5% returns. Currently, it's again, I think it is increased by 1.5%. But again, it is annuity income product कि आप कितने टाइम में निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपका रिटर्न कंप्लीटली डिपेंड करता है. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो लास्ट ईयर की बात करूं मैं, लास्ट ईयर का सर्वे है जिसमें वी गॉट द रिपोर्ट कि जिन लोगों ने रेसिडेंशियल में घर खरीदे हैं 75%, 50 to 75% पीपल वर लाइक कि हमें घर खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, सेकंड होम हो, थर्ड होम हो या फोर्थ होम हो, एक घर खरीद लिया, दो घर खरीद लिए, बट हर बार इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदना इज नॉट a safe or good investment for anyone. Equity, so that completely depends on market volatility कि market कैसा चल रहा है. तो equity में investment भी एक तरह से आपका risk हो सकता है, returns अच्छे आते हैं, but high risk high reward वाला game है वो भी. Insurance, mutual fund, alternative investment. So what is the option for alternative investment? Do people know that मुझे पैसा कहाँ पे डालना चाहिए, कहाँ से मुझे अच्छे returns आ सकता है? Yes, definitely there is a need of alternative investment, and that alternative investment is your commercial real estate, which is CRE. That is the best performing asset from last decade. So you can see the figures year on year from 2013, 14 to 21, 22. Returns are on two digit numbers. FD का आप देख सकते हैं 5.6%, residential maybe. So these numbers are your IRR, not the ROI. Okay, residential, Sensex, gold. So advantage of CRE, what is the advantage? So first is your high rental yield. It gives you more than any asset class in real estate. It gives you the ROI. लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन. सो आरओआई के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है. एंड अगेन दैट इज स्टेबिलिटी इन एसेट क्लास दैट इज देयर. And why commercial real estate is not mainstream? Why people do not invest in commercial real estate? The only thing is that if we want a grade A property, हमें grade A property चाहिए with a grade A tenant, तो हमें उसके लिए हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आज फेसबुक या गूगल किसी बिल्डिंग में है और मुझे इन्वेस्ट करना है उस एसेट में, तो मुझे पता है कि फेसबुक और गूगल ने एटलीस्ट वहां पे 50,000 70,000 का स्पेस लिया होगा, राइट? एंड आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू बाय दैट फ्लोर. सो लोग ग्रेड ए प्रॉपर्टी चाहिए, ग्रेड ए एसेट चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि कैपिटल मैनेज नहीं कर पाते हैं उतना, राइट? देन दूसरी चीज होती है टेनेंट और एसेट मैनेज करना. सो टेनेंट का मैनेजमेंट प्लस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, दोनों चीजें एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए हेडक होता है. इनएक्सेसिबिलिटी इशू है, राइट? डेवलपर से जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हो तो डेवलपर्स का खुद का प्रॉफिट मार्जिन बुक होता है उसमें. तो डेवलपर से अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाय करते हो तो यू नेवर गेट दैट रिटर्न इन प्रॉपर्टी, बिकॉज सपोज आज मार्केट की एक मैं वैल्यू बता देता हूँ, आपकी करंट मार्केट वैल्यूएशन जो किसी प्रॉपर्टी की होती है. सो एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल पुणे की बात करता हूँ, तो पुणे का एक कोई बानेर करके एक एरिया है जैसे, तो बानेर में कोई प्रॉपर्टी है, डेवलपर है पंचशील या फिर अमर, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करी है कुछ 10,000 रुपीज 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. एंड जब मार्केट वैल्यूएशन करते हो तो प्रॉपर्टी का प्राइस है 9,000 रुपीज. अगेन क्या रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी पोजीशन के बाद, कितना रिटर्न आ रहा है, तो आपका रिटर्न भी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, बिकॉज डेवलपर का प्रॉफिट मार्जिन भी वहाँ पे बुकड है ऑलरेडी, राइट? दूसरी चीज होती है आपकी लैक ऑफ लिक्विडिटी. सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए. इन्वेस्टर डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग कि मुझे टेनेंट ढूंढना पड़े, मुझे कल को प्रॉपर्टी बेचने जाना है, तो आई डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मैं किसी भी प्राइस पे बेच सकता हूँ, मेरा लॉस हो सकता है, राइट? दूसरा, मुझे बायर ढूंढने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है. तो लैक ऑफ लिक्विडिटी ऑल्सो इज द मेन रीजन पीपल डू नॉट इन कमर्शियल रियल एस्टेट. For all these things you need an expert, and definitely Strata is that expert. It's a tech enabled platform where people invest in grade A commercial assets, just like warehouse, industrial manufacturing units, office asset or retail assets. Currently we have 40,000 plus users in our dashboard who are using our dashboard. We are managing 865 crores के asset across country, all tier 1 cities. North में हम लोग अभी तक नहीं गए हैं, but we have assets in Chennai, Hyderabad, Bangalore, Pune, Mumbai, Jaipur. So all these cities have our asset, and we are managing our investors portfolio over there.
सो टेक, जैसे ही मैंने कहा टेक इनेबल्ड, तो ये कैसे वर्क करता है बेसिकली? सो to invest in any commercial, any grade A asset, you just need 25 lakh rupees minimum to invest in any commercial real estate asset. First of all, it is completely data-driven process. So all documents, legalities, everything will be provided to you on day one. So आज अगर मैं किसी asset की बात कर रहा हूँ, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जयपुर का asset आने वाला है, तो जयपुर के asset आने के पहले सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ कि सर एक बार गो थ्रू कर लो, सारी चीजें चेक कर लो, अगर सब कुछ आपके हिसाब से है देन यू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इट्स अ कंप्लीट डेटा ड्रिवन प्रोसेस। you'll have your dashboard जहाँ पे आपका खुद का आईडी पासवर्ड होगा, you can track your returns, all property documents, legal documents, everything will be there on that dashboard. Sell, so basically we have multiple avenues to sell the asset. So Strata sell that asset after a certain period of time when we feel that मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी जब हम लोग एक्वायर भी करते हैं तो वी ऑल्सो सी कि मार्केट वहां पे कैसा है, क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में डेवलपमेंट का, और अगर ऐसा है कि मार्केट कंप्लीटली सैचुरेटेड है, वी विल नॉट गो अहेड विद द एसेट। हम लोग प्रॉपर्टी वही एक्वायर करते हैं जहां पे हमें कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ आरओआई भी मिलता है, दोनों चीजें हमें मिल रही होती है। ठीक है, और कुछ सालों के बाद जो हमें लगता है कि नहीं अब ये मार्केट सैचुरेट हो रहा है, जितना प्राइस बढ़ना था इस मार्केट का वो बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो वी गो फॉर सो वी गो टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड हम लोग जब उनका एजीएम करते हैं तो वी आस्क देम कि सर दिस इज अ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, डू यू वांट टू सेल योर फ्रैक्शन और सेल योर प्रॉपर्टी, राइट? सो सारे इन्वेस्टर्स से हम लोग वो डिस्कशन करते हैं एजीएम में। 75% इन्वेस्टर्स का अगर से होता है यस वी शुड एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, तो स्ट्राटा विल गो इन द मार्केट एंड फाइंड अ न्यू बायर फॉर दैट प्रॉपर्टी। तो वो रीसेल का प्रोसेस होता है जो स्टार्टा ही करता है। आपके डिसीजन से ही हम लोग वो सेल कर सकते हैं, स्टार्टा का खुद का से कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज वी एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, राइट? सो हम लोग सारी जो डिसीजंस लेते हैं वो आपके थ्रू ही लेते हैं, हम खुद का डिसीजन कुछ भी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, end to end management. So basically Strata manages the entire life cycle of the asset from your entry till the exit of the asset, sale of the asset, natural sale. So that completely will be managed by Strata. Your rentals, your SPV, your tenant, everything will be managed by Strata. How do we choose our properties? So as I said, we do the property screening. We also see that property कुछ हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं ऐसे कि टेनेंट शुड बी टियर 1, अच्छा टेनेंट होना चाहिए, ग्रेड टेनेंट होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन का एडवांटेज क्या है, क्या पोटेंशियल डेवलपमेंट है फ्यूचर में आना है वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, प्रॉपर्टी ग्रेड होनी चाहिए। वंस इट इज डन वी गो फॉर एसेट ड्यू डिलिजेंस। इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स एंड कंसल्टेंट्स will be doing the legal due diligence of that particular asset. If property has not any tenant, we go to search a tenant as well. और मोस्टली हम लोग जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं उसमें टेनेंट होता है, वो प्री लीज प्रॉपर्टी ही होती है। बाय एनी चांस अगर टेनेंट नहीं है तो टेनेंट देखने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं। वी डू द इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि वी नेगोशिएट फ्रॉम द डेवलपर। एज आई सेड, जब प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं तो वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स वेयर वी सी that the property tenant lock-in should not be less than 3 years. Also, we check that the ROI should not be less than 8%. क्योंकि आज की रेट में इन्फ्लेशन ही 7% चल रहा है, तो मैं अगर इन्फ्लेशन में बीट नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मेरे प्रोडक्ट में तो दम ही नहीं है, वो वाली बात हो जाती है। तो वी ऑल्सो सी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिटर्न सबसे अच्छा दे रहा हूँ, राइट? तो 8% मिनिमम रिटर्न शुड बी देयर, तभी वो प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर करेंगे। And all assets are vetted and approved by committee of expert. We have an exclusive data partner which is PropStack. So market जैसा prop equity है, market का पूरा data जो हमें मिलता है वो PropStack के थ्रू मिलता है। So what is the investment process? So once everything is done, due diligence is done, property is finalized, we have given the token, right? So हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे, स्ट्राटा के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे सपोज अभी आज जयपुर का एसेट आता है तो आप लोग देख पाओगे कि हमने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट कर दी है, उसके पहले का प्रोसेस ऑलरेडी सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ठीक है,
हमने प्रॉपर्टी को लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। वी मेक अ एसपीवी टू परचेज द एसेट, एक एसपीवी फ्लोट की जाती है टू परचेज द एसेट। और हम लोग जो फंड रेस करते हैं मार्केट से रेस करते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू टू बाय द एसेट। सो स्ट्राटा डज नॉट बाय एनी प्रॉपर्टी, स्ट्राटा रेजेस द फंड टू बाय दैट प्रॉपर्टी। और जिनसे हमारे पास पैसा आता है, सपोज यू बीइंग एन इन्वेस्टर, यू विल बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट एसपीवी जो कि बनाई गई है पर्टिकुलर उस एसेट को खरीदने के लिए। तो यू विल हैव योर शेयर्स, आपका शेयर सर्टिफिकेट होता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी भी पहले के टाइम में भी पीपल यूज टू बाय लैंड्स, तो 8-10 लोग मिलके खरीद रहे हैं तो दे यूज टू मेक अ एलएलपी फॉर्म, राइट। अब एलएलपी में जो ओनरशिप होती थी लैंड की, वो एलएलपी की होती थी, किसी सिंगल इंडिविजुअल के नाम से नहीं होती थी। एलएलपी में आप शेयर होल्डर होते थे, आपका शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था। इन द सेम वे यहाँ पे भी एसपीवी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू विल बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसपीवी। you'll have your share certificate, you'll have your ownership documents, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे उसके। एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिटर्न्स ओवर दैट। जो भी एसपीवी के अकाउंट में आता है वो आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं प्रोपोर्शनेटली। सो एसपीवी हमने बना ली है, पैसा सर हमने कलेक्ट कर लिया 100% टू परचेज द एसेट। जनरली 30 डेज का टाइम होता है किसी भी एसेट को सेल आउट करने के लिए। And investors are made shareholders in SPV, which will buy the asset in their behalf, and Strata start managing the asset, and investor start receiving their monthly returns. So tenant ka management, SPV का management, everything will be done by Strata, not by any investor. आपको घर पे बैठ के खाली रिटर्न्स एंजॉय करने हैं। यू जस्ट ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट कि आपका रेंट मंथ ऑन मंथ आ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट से इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी चीजें आपको आप अपने डैशबोर्ड पे ट्रैक करते रहते हो। दिस इज द ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द एसेट। अब कोई भी एसेट हमने लॉन्च किया है तो ये एसेट है, एसेट की ओनरशिप होती है एसपीवी की, क्योंकि एसेट खरीदा गया एसपीवी के नाम पे, एंड इन्वेस्टर्स आर द शेयर होल्डर ऑफ दिस एसपीवी। आप सिक्योरिटी होल्डर हो इस एसपीवी के। ओके, सो कोई भी एसपीवी जहां पे फंड इन्वॉल्व है, आपका फंड फ्लो इन्वॉल्व है, देयर शुड बी अ ट्रस्टी, देयर शुड बी एस्क्रो पार्टनर एज पर रिजर्व बैंक गाइडलाइन और कंपनीज लॉ। तो वहां पे आपका ट्रस्टी होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्टा आपके पैसे पे किसी भी तरह से इंटरप्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। देयर शुड बी ट्रस्टी, तो पूरा का पूरा जो फंड फ्लो होता है वो आपके एस्क्रो ट्रस्टी के थ्रू होता है। देयर इज अ कस्टोडियन, जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के एक्चुअल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कस्टोडियन की कस्टडी में होते हैं, ठीक है। एंड स्टार्टा क्या मैनेज कर रहा है? आपका एसपीवी एसेट एंड टेनेंट। सो इन्वेस्टर डैशबोर्ड की अगर बात करूं, आपका जो डैशबोर्ड होगा, आई विल शो यू द एक्चुअल डैशबोर्ड ऑफ द इन्वेस्टर, कि वो डैशबोर्ड कैसा दिखता है, कैसे ट्रैक होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, क्या क्या चीजें आप उसमें देख सकते हो। सो पहली चीज, इन्वेस्टर डैशबोर्ड में यू विल हैव योर एसेट डिटेल्स। जो भी कोई नया एसेट आएगा उसका भी हम लोग उस पर मार्केटिंग करते हैं, तो आपके डैशबोर्ड पे भी वो दिखता है, ठीक है, कि ये कमिंग सून है, आने वाला एसेट। टीडीएस सर्टिफिकेट्स, रेंटल पे आउट्स एंड एसपीवी कैश फ्लोज। every 6 months you will have the valuation report of that property, तो you get to know कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, and that valuation will be done by JLL. JLL is our valuation partner. तो जब आपका एसेट सपोज 1 साल 2 साल क्रॉस हो गया है, ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, एंड आपने खरीदा था एक सर्टेन एक्स वैल्यू पे, और जब आप 2 साल के बाद में आप एसेट की वैल्यू देख रहे हो तो एक वाई वैल्यू हो गई है, बढ़ गई है वैल्यू, कि 50 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 2 साल के बाद वो 70 रुपए की हो गई। तो हर 6 महीने में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको मिलती है, वेर यू गेट टू ट्रैक आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूज। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, मार्केट डेटा, कि मार्केट में क्या ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, उस वेसिनिटी में क्या प्राइस पे रेंट जा रहा है, क्या प्राइस पे प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है, दैट रिपोर्ट विल बी अपलोडेड ऑन योर डैशबोर्ड। लीज एंड सेल ट्रांजेक्शन, तो सीआरई मार्केट डेटा में भी आपका लीज एंड सेल ट्रांजेक्शन आ गया मार्केट में। सो व्हाट इज द एसेट मैनेजमेंट सर्विस? स्टार्टा की तरफ से आपका, एज जैसे मैंने बोला कि स्टार्टा प्लेज अ वाइटल रोल ऑफ बीइंग अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड वी गिव यू द सर्विस। सो सर्विस में हमारे क्या क्या आता है? पहली चीज एसेट जो प्रॉपर्टी टूर एंड रिव्यू हो गया, एसेट परचेस, एसेट रजिस्ट्रेशन। सो एसेट रजिस्ट्रेशन जो फेलिसिटेशन होगा, दैट विल बी डन बाय स्टार्टा। लीज नेगोशिएशन, टेनेंसी मैनेजमेंट, एसेट अपकीप, 6 महीने में वैल्यूएशन रिपोर्ट, एसेट सेल नेगोशिएशन, एट द टाइम ऑफ एग्जिट एसेट को बेचने का काम भी स्टार्टा का ही है।
अगेन आपके परमिशन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. Investor service, so dedicated investment manager will be, I will be your investment manager, or Vaibhav will be your investment manager. You'll have online dashboard. Currently we have launched the application as well, so हर client के लिए हमने application भी launch कर दिया है इसका Strata का. Market updates and reports, rental disbursal, resale or purchase facilitation, tax related, if any query you have, you can always reach out to us. लिक्विडेशन ऑप्शन क्या है? सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का कि कल को मुझे अगर इमरजेंसी में एग्जिट करना है तो हाउ कैन गेट एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एसेट. सो पहली चीज तो किसी भी इन्वेस्टर को वी वुड रादर सजेस्ट कि सर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी रियल एस्टेट, नॉट विद स्टार्टअप बट एनी रियल एस्टेट, कोई भी इंडस्ट्री में आप रियल एस्टेट में आप अगर पैसा डाल रहे हो, और अगर आप डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो सर 1 साल 2 साल में एग्जिट करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 साल 2 साल में आपको मिलती नहीं. सो पहली चीज है कि एटलीस्ट बी देयर फॉर 3 to 5 years इन एनी एसेट क्लास. आप वहां पे उसके नेचुरल सेल तक वेट करो, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको तभी मिलेगी, राइट? क्योंकि तभी आपका साइजेबल कैपिटल गेन आपके हाथ में आएगा. रिटर्न्स आप ऑलरेडी रेंट के थ्रू कमा ही रहे हो, ठीक है. दूसरी चीज आती है प्राइवेट ट्रांजेक्शन. सो यू हैव द वैल्यूएशन रिपोर्ट, you are free to sell your fraction, your share after 1 year, क्योंकि सिक्योरिटीज जो आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वो सिक्योरिटीज का स्ट्रक्चर हम 1 साल तक चेंज नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. तो 1 साल के बाद में यू कैन एग्जिट एनी टाइम. आप सपोज आपके पास इमरजेंसी एग्जिट आ गई, रिटर्न्स आ रहे हैं, फिर भी आपको एग्जिट करना है, आपके पास इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है, तो इफ यू हैव समवन इन योर फैमिली, क्योंकि रिटर्न्स आ रहे हैं, आपको पता है आप सामने आप किसी फैमिली को भी सेल आउट कर सकते हो, फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को दे सकते हो, या तो आप स्टार्टा का रीसेल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. स्टार्टा ऑल्सो हैज अ रीसेल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने जितने भी रीसेल के फ्रैक्शंस आते हैं हमारे पास में, शेयर आते हैं, वी लिस्ट दोज ऑन दैट रीसेल प्लेटफॉर्म, एंड वो 15 to 20 days में आपका सेल आउट हो जाता है, यू गेट योर मनी बैक. सो आपका 25 लाख जो आपने डाला है वो आपको रिटर्न आ जाता है, ठीक है. हाँ, इफ यू वेट फॉर नेचुरल सेल ऑफ द एसेट, 2 साल 3 साल 4 साल जब भी स्टार्टा सेल कर रहा है उसको, तो यू गेट द एग्जैक्ट कैपिटल अप्रिसिएशन ऑन दैट प्रॉपर्टी. सो आई वुड नॉट गारंटी आपका इंडिविजुअल फ्रैक्शन के लिए कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, बट हाँ 25 लाख आपने डाल, 25 लाख मिलेगा, प्लस रेंट यू हैव अर्न्ड, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है. Who can invest with Strata? Anybody except NGO and trust. So Indian residents है, आपके HUF, LLPs, private limited companies, AIF, PMS, कोई भी आपका इन्वेस्ट कर सकता है. Key investment terms क्या है? So 25 lakhs is the minimum investment amount for any asset. Recommended time for investment is 5 to 7 years, and average rent need for any asset is 8 to 12%. Asutoshji, I guess I'm unable to show this screen because someone has taken that authority of showing the screen. Could you please check that? Is it visible now? Yeah, but I think somebody's Please mute mute. Nagarjun Saka. You can mute them. I think you Nagarjun can Saka. mute all better. Is it fine now? Okay. So average expected IRR is 12 to 15%. IRR stands for your capital appreciation as well as your return on investment. So आपका rental plus capital appreciation both are IRR. So we also target that minimum 5 to 6% capital appreciation किसी भी asset में होना चाहिए, whether it is a office asset or maybe a warehouse or industrial asset. Tax. Can I ask one question here? Yes, yes, please, please. Can you come back on that slide, because I have one query. This one? Yeah. This. Oh.
basically average rental yield is like 8 to 12% per annum, right? Yes, sir. Yes. So what is this IRR? 12 to 15%? How does it actually? Okay, I'll tell you. So 8 to 12% is the range for any particular asset. And it could be 9% or 10% or 8%. Minimum Okay. is 8%, maximum could be 12% in Right. Indian real estate. Hmm. IRR is your capital appreciation, which is 4 to 5% in any asset class. Your year-on-year capital appreciation. I'm not talking about the rental part. Yeah, yeah, okay. I'm talking about the land value and the property value. Okay, so my 25 lakhs, what is there, would have appreciated by 12 to 15% Yes, as yes. an asset totally. Yes. Okay, Exactly. right, yeah. What's the time period there? 3 to 5 IRR. years, sir. As I said, 3 to 5 years. At least be there for 3 to 5 years. Okay, okay, fine. So by 3 to 5 years, this is a expected at least market scenario, 12 to 15% I can expect. So Right. I'll show Okay. you the financial model. For an example, our last asset was in Mumbai. So I'll show you the financial model of Mumbai asset. So you get to know how the property value increases and how the rentals are coming in. Okay, sure, sure. Okay. So taxation. So first thing that rental income is treated as interest income. So it is coming under your income from other sources. So tax slab as per your taxation will be applicable as per your tax slab. So first thing, why is it so? The reason is कि जो आपको securities distribute हुई हैं, those securities are in the form of CCDs, compulsory convertible debentures. Okay, and each CCD has a coupon rate which is proportionate to your rental income. एक interest percent होता है CCD का, और why CCDs? Because it can be converted into shares after a certain period of time. So कल को अगर मुझे asset sell करना है तो आपकी CCD को मैं equity में convert करूंगा और मैं sell कर दूंगा. So basically share transfer जो मैं बात कर रहा हूँ, right? So आपकी जो income आ रही है that is coming as interest income, not as rental income. Value same रहेगी, amount उतना रहेगा, but it will be taxable as per tax law because it is an interest income. Short-term capital gain tax and long-term capital gain tax. So if you sell your fraction after 24 months, LTCG will be applicable. Long-term capital gain. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆ Okay, so long-term capital gain tax at 20%, as well as you get the indexation benefit of 5%. So अगर आप 24 महीने के बाद में sell out करते हो या फिर exit करते हो तो you get that benefit. 24 months के पहले अगर आपने exit किया है तो short-term capital gain tax applicable होगा, which is 30%, and again you do not get any indexation benefit on that. So that's the reason I'm suggesting you to be there for at least natural 3 to 5 years or wait for natural sale of the asset. Any query till now on taxation part? Nothing from me. It's good. Okay, I'll tell you about the risk matrix. So people think that what are the risks because it is completely digital, tech enabled, and you don't get to see the property because आप अगर सपोज मैं बैंगलोर में एसेट लॉन्च कर रहा हूँ, जयपुर में एसेट लॉन्च कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू ट्रैवल तो आप जाके देख सकते हो. अगर आपको नहीं जाना है तो आप सबसे पहली चीज आती है रिस्क, क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें. तो पहली चीज आती है कैपिटल रिस्क, क्या मेरा पैसा सेफ है. सो पहली चीज है योर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट invested through your rental income, which is paid out as interest on CCD, and again interest on security deposit. So tenant से जो security deposit आ रहा है हमारे पास में या SPV के पास में, that is also parked as FD in a bank. तो वहां से भी एक इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है जो आपके रेंट में इंक्लूड होके आता है, राइट. दूसरी चीज ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड अंडरलाइंग लैंड लाइज विद द एसपीवी. तो सारी चीजें एसपीवी के नाम पे है वहां पे, वेयर यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट एसपीवी. लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया,
Liquidity risk आपका as I said, there's a minimum horizon for investment or be there for at least 3 to 5 years, and also Strata provides the exit option from the asset. अगर आपको exit करना है बीच में तो आप exit कर सकते हो, तो liquidity का भी कोई issue नहीं है वहाँ पे. रियल एस्टेट रिस्क क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम आता है रियल एस्टेट रिस्क की, अगर मैं बात करूं, इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि क्या ये प्रॉपर्टी टाइम पे कंप्लीट होगी, या प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी. ठीक है, नहीं हुई तो मेरा पैसा फंस गया है वहां पे, राइट. सो यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है, हमने वो मिटिगेशन रिस्क पूरा दूरी कर दिया है, बिकॉज वी ओनली एक्वायर प्री लीज्ड एसेट, रेडी एसेट, जहाँ पे टेनेंट ऑलरेडी है, जहाँ पे रेंट ऑलरेडी लैंडओनर के पास या डेवलपर के पास जा रहा है, और वो पूरा का पूरा एसयूवी के नाम पे आने वाला है. Second thing, properties leased out to reputed companies or tenants who have also done their due diligence or legal, सारी उन लोगों ने due diligence कर लिया है ऑलरेडी लैंड और टाइटल के ऊपर. सेम उसके बाद हम लोग भी करते हैं, as I said कि that will be done by reputed law firms or consultants. Tenancy risk क्या होता है? Only pre-lease properties and lock-in period. As I said, the minimum lock-in period for any tenant should be minimum 3 years, not less than that. Then only we will move in that particular asset. Proactive management, asset management done by Strata. So basically, if tenant wants to leave the property, he has to give us prior notice of 6 months. 6 महीने का वो prior notice हमें देना पड़ेगा tenant को, so that we can go out in the market and find a new tenant. So currently, एक किसी भी asset का अगर मैं example दूं आज की rate में, if developer has that asset and we want to acquire the asset, so currently developer is managing the relation with the tenant. But once the sale is done, हमारे पास में जब वो एसेट आ जाएगा, तो Strata will start making the relationship with the tenant. हम लोग उनसे हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में जाके हमेशा एक एटलीस्ट इनसाइट लेते रहेंगे कि कितना टाइम आगे रुकने वाला है. सपोज अगर 3 साल के बाद लीज भी खत्म होने वाला है, तो मैं शायद 2 साल के बाद ही उसके पास जाके पूछ लूंगा इफ दे वांट टू स्टे देयर इन प्रॉपर्टी और नॉट. ठीक है, अगर वो लोगों का प्लान होगा कि नहीं हमें निकलना है यहाँ से, तो वी विल गो आउट इन द मार्केट एंड फाइंड अ टेनेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट. These are few tenants in our platform. All tenants are Big Shot, Tier 1 tenant. Reach Local is there. Union Bank of Switzerland, Swiss Bank है यहाँ पर, Randox Pharmaceutical, AGS Health, SM Auto, Favourly Transport, West Side, one retail asset we have done in Chennai. ProConnect, Wakefit, largest mattress producer. Microplastic, largest plastic toy maker company, largest plastic exporter in India. Puma का headquarter we have done in Bangalore. So these are the cities we have done our assets, and we are managing our portfolios. Can I ask you one more question? Yes, please, sir. Yeah. If there is a property for sale, a commercial property, okay, is it possible that we can bring that also into Strata? We can work on it. Small size, it will be around say 15-16 crores. Sir, 15-16 crores assets we have done in past, but right now we are looking bigger assets like 30 crore plus, 40 crore plus. Okay. Not less than that. Fine, because I have one in prime location in Bangalore. So I'm looking on selling it anyway, but if in case this can be a better option, we thought I can do it. So basically, it's a smaller asset. We have done smaller assets in our initial days, but right now, as company has stressed their portfolio. So we have a certain level, and above that only we can exactly. Because so the returns also will work out for better. Yes. Sure. I got it. Okay. Fine. So I can work on anything above 30 crores. 30 crores and above. Yeah, sure. I'll do that. Thank you. These are the people from the leadership board. Sudarshan Lodha is the CEO of the company. He was a lawyer by profession. He worked with Chief Justice of India as an associate. Priyanka Rathore, ex-WeWork, she is a financial analyst. So now she is a co-founder of Strata. Nihar Shah, ex-Pyramid Capital, head of investments. These people are from the other departments like legal, finance, and chief of staff marketing. Who are the backers of the Strata? So first thing comes in the mind that यार सब कुछ ठीक है, but Strata का backer कौन है? Strata को कौन back कर रहा है? So Elevation Capital is a VC जिन्होंने Swiggy, Meesho, Book My Show, ClearTax, NSE में invest किया हुआ है. So they are our backers. Kotak Investment Advisor, Mayfield is there.
Gruhas is a prop tech fund of Nikhil Kamath Zerodha. So ये हमारे backers है जिन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं. Who are the partners? So custodian, as I said, in any where the fund flow is involved, there should be trustee, there should be custodian, there should be escrow partner, because पैसा स्टार्टअप का नहीं है, पैसा क्लाइंट्स का है. So custodian, universal trusteeship service, it's a sister concern company of ICICI Bank, and Vistra is the trustee. So entire fund flow will be managed by Vistra and ICICI Bank. Razor Pay payment solution, market data intelligence, we use PropStack. SDFC is the banker with Strata. So यहाँ तक कोई question? So I'll take you through the dashboard and the financial model. I think it's clear. We can go ahead. Okay. क्या इसका? Hello? Yes, ma'am. Please tell me. Can we have the PDF of this if possible? Yeah, definitely. I'll share the PDF with you. Yeah, thank you, sir. Yeah, I'll get it to you, ma'am. And Yeah, anyway, I have a PDF of that. In the Thank group, you. in our group it has come. I'll share it to you. Yeah, sure. Okay. सो मिस्टर अखिल, ये तो आपने पूरा का पूरा एएमए कर दिया यहाँ पे, बट इसके बाद आपको अब एक बार जो हमारा लास्ट एसेट था मुंबई एसेट, उसके कुछ फाइनेंशियल मॉडल समझाएंगे? Financial model. So that I am going to show you right now. Just a second. उसके बाद फिर किसी के कुछ Q&As होंगे तो लास्ट में हम लोग उसको एक बार ले लेंगे. Yeah, definitely. वाइंड अप करने से पहले सारे के सारे Q&As लास्ट में एक साथ ले लेंगे हम लोग. Yes. डोंट वरी ममता मैम, ये मैं अभी आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. एएमए स्लाइड्स आपको मिल जाएगी सब. Is my screen visible, Ashutosh ji? Yes. So this is the financial calculation of the last asset जो हमने नवी मुंबई में किया था, और वो एसेट सोल्ड हो चुका है और उसका एक रेंट भी हमारे क्लाइंट्स के पास में चला गया है. So this is the asset, Strata Navi Mumbai office opportunity, and the developer was L&T, and L&T Grand Central Seaboard Navi Mumbai का one of the biggest landmark project है, जहाँ पे हम लोगों ने 4 फ्लोर एक्वायर किए थे, 4 अलग अलग टेनेंट, and this is one of them. So 53 crore 30 lakhs का एसेट था वो. The net purchase value was 53 crore 30 lakhs including all taxes and everything. Gross purchase price जो एसेट में हम लोगों ने बाय किया था, that was 12,250. Current price was 15,000 rupees in that particular property, and we negotiated with the developer because we got 2 lakh square feet of area in bulk, and L&T wanted to exit from that property. L&T वहां से निकलना चाहता था, बहुत desperate deal थी, and we got it at a very good price. That's the reason we got it at 9.1% ROI. Rent per square feet 91.5 rupees per square feet. Gross yield was 9.1%. So let me show you ये इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है और कैसे कैलकुलेशन होता है इसका. So 25 lakhs, this is the assumption, okay? तो 25 lakhs मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है कि सपोज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 25 lakhs. Targeted annual cap appreciation 6% year on year. So this is capital appreciation because उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हम लोगों ने 18% कैपिटल अपसाइड बेसिकली कहना चाहिए, कैपिटल अपसाइड पे हम लोगों ने बाय किया था, जिसमें आपका 18% ऑलरेडी डे 1 पे आपका अप्रिसिएशन मिला हुआ है प्रॉपर्टी पे. स्टिल मैंने टारगेट एनुअल कैप अप्रिसिएशन 6% ईयर ऑन ईयर रखा हुआ है. ठीक है. एग्जिट ईयर यहाँ पे 5 years हमने रखा हुआ है बिकॉज द लॉक इन वाज 5.5 years एंड द लीज पीरियड वाज आपको ऑलमोस्ट 6.5 years. Okay. Annual rent per square feet is 1,098 rupees. Total area of that particular tenant is 39,052 square feet. An investor gets 183 square feet after investing 25 lakh rupees. Capital gain taxes की अगर मैं बात करता हूँ, so 25 lakh आपने इन्वेस्ट किया, you get the indexation benefit because again 2 साल 3 साल आप रुक रहे हो वहां पे, उसके बाद so you get indexation benefit of 5%. So indexed cost price will be
31,90,704. What is the gross sale price? So gross sale price हम कैसे कैलकुलेट किया हमने, जब आप बेच रहे होगे उस टाइम पर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, तो 6% मैंने मिनिमम कैपिटल अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी पे रखा हुआ है. सो कंसिडरिंग दैट अप्रिसिएशन पार्ट, आपका ग्रॉस सेल प्राइस होता है आफ्टर 5 years 33,45,564. ओके, कैपिटल गेन्स कितना हुआ आपका 1,54,860 एंड योर टैक्सेस आर 30,972. दिस इज द रिटर्न पार्ट. तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये ईयर ऑन ईयर है, मैं मंथ ऑन मंथ भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 25 lakhs. ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका रिटर्न जो आ रहा है 2,01,121 आ रहा है. प्री बुकिंग ऑफर, सो जब भी कोई एसेट हम लोग लॉन्च करते हैं तो वी रन अ प्री बुकिंग ऑफर, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होता है जहाँ पे स्टार्टा बेसिकली चार्जेस अ मैनेजमेंट फी ऑफ 1% एवरी ईयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. सो इन दिस केस फर्स्ट ईयर वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग. फर्स्ट ईयर हम लोग कोई भी 1% नहीं लेते हैं. इवन rather than taking 1%, we are giving you 1% rental top up in first year. Interest on security deposit. So whatever security deposit came from the tenant, that is parked into a FD account. वहां से भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है. 3,017 आपका इंटरेस्ट हो गया. Property tax, insurance. In that particular asset, property tax was won by tenant, not by the developer. यहाँ पे इंश्योरेंस का अमाउंट है आपका तो 1,945 रुपीज. मैनेजमेंट फी 25,000. टोटल रेंटल इज 2,02,194. ये फर्स्ट ईयर का है. एंड अगेन उसमें आपका एस्केलेशन ऐसा था कि एवरी 3 year देयर विल बी एस्केलेशन ऑफ 15% ऑन योर रेंटल. सो आज 91 है तो 15% 3 साल के बाद बढ़ेगा तो 102 103 रुपए हो जाएगा. सो दैट्स हाउ इट इज डन. एंड सेकेंड ईयर में आप देख रहे हो, सेकेंड ईयर में मैं कोई रेंटल टॉपअप आपको नहीं दे रहा हूँ. सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहा हूँ, आपका रेंट कम होता है. थर्ड ईयर में भी कम रहता है. फोर्थ ईयर में आपका बढ़ जाता है बिकॉज 3 साल के बाद में आपका एस्केलेशन है रेंट पे, 192 हो जाता है. फिफ्थ ईयर में प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंट आपने कितना कमाया वो वैल्यू मैं आपको शो करता हूँ. सो ये पूरे 4 साल में, 4 साल के बाद 5 साल में आपने रेंट जो आपके अकाउंट में आया दैट इज 10,50,860 रुपीज प्लस your property value is 33,45,564. So how much you have made? So basically investment 25 lakh का आपने रखा. Average rental yield you got 8.6%. Targeted IRR is 12.9%, approximately 13%, and your profit is 16,73,994. That includes your ROI as well as your capital appreciation. So what is your investment multiplier, which is 1.7x of 25 lakh rupees. तो दैट मच अमाउंट यू हैव मेड. यहाँ पे आपका जब आप एग्जिट कर रहे होते हो, सो वी हैव सेट अ हर्डल रेट ऑफ 10% IRR. सो जो आप एग्जिट कर रहे हो, सपोज 3 साल में आप एग्जिट कर रहे हो और आपका IRR 10% क्रॉस कर रहा है आपका प्रॉफिट, तो 10% के ऊपर जितना भी क्रॉस करेगा उसको 20% प्रॉफिट आई विल टेक, 80% विल बी योर्स. सो सपोज यहाँ पे जैसे 12.9% है तो 2.9% का 20% आई विल टेक, 80% विल बी योर्स. प्रॉफिट over and above 10%, 20% profit will be mine. And these are one question just before yes, that. yes. Can you just go little thing? The second and third year I wanted to know, like, why is there a reduction in that income? The reason is, I'll tell you. The reason is, you can see the numbers are same, right? Second year or third year. So 25,000 first year I have given you as a rental top up. Second year and third year I am not giving any rental top up. Rather I am taking 25,000 rupees from you as a management fee year on year. Okay. That's the reason that reduction is there. Okay. So 25,000 for first year. I mean second year and third year. Yes, and second year, third year, fourth year. So jitne lambe time tak if you will be there and you have to pay me that 25,000 because I am managing everything. Right. So from year 4th onwards, you are giving appreciation on the rental value also. Yes. So basically, that is expected. Yeah. So basically, after 3.5 years, there is escalation of 15% on rental. Okay. That's the reason you can see the increment in rentals are 8.69% and there is 9.29%. Oh, great. Okay, fine. Okay. Excuse me, Akhil. It's Vivek Trivedi. Yes, please. I have a question. Just in case
could be some maintenance cost in the asset. So that will be charged separately, or what will be about that? So basically, in any commercial property, maintenance will be done by tenant, not by the owners or the investors. Okay. Yes. So that will not be charged from you. That will be taken care by tenant only, not by you. Okay. Thank you. Yes. Okay, so this is a month-on-month return. So you can see the calculation over here. Investment 25 lakhs. So first Jan से rental उनका start हुआ. Annual income. So this is monthly income basically. 16,760 rupees. Pre-booking offer, which is again rental top-up, which is of 25,000. That has been distributed among all the months. So आपका proportionately 12 महीने में उसको divide किया है. 2,083. Other income use interest on security deposit 251. So your total inflow is 19,095 after investing 25 lakh rupees. What are the outflows in that? So your insurance amount, which is 162 rupees, and the management fee, which is 2,083. So your income pre-tax is 16,849. ये आपका return है month on month, and after deducting the TDS, it is 15,165. So net payable amount on your account is 15,165. Agar if you invest in the name of someone from your family who जिनके पैन कार्ड पे इनकम नहीं है, जो पैन कार्ड पे इनकम शो नहीं करता है, again you can save this amount as well by submitting the form 15G. You can save this amount as well. So you are getting 16,849 rupees per month. ठीक है, तो ये month on month आपका return है. You can see second year में कम होगा definitely 14,000. This is the amount you can save, you said, tax part, is it? Sorry? The amount which can be, if it is put into somebody's PAN number in the household. Yes, yes. And what do I save? Which one I save? Sorry, your voice is breaking. Just a second. Let me check. 1685. 15G, form 15G. Okay. Yes, that will be given by Strata only. So you just have to fill that form and give it to us. Fine. Okay. So that tax deduction will be saved But from. it should be no, it cannot be done on a minor's name. No. Right. So Okay. basically, anyone in your family who is not working or who is not earning, or Okay. maybe their income is less than 7.5 like so current tax regime. So if their income is less than 7.5 lakhs or less than 5 lakhs. Yeah, within the tax bracket, if they are inside. Yes, they are we not can- liable to pay taxes, right? Okay. You just have to submit the form 15G and you can save that deduction. And that can be reversed anytime later. Anytime. Okay, done. So this is the financial model. Year on year and month on month calculation is there. And now I'll show you the dashboard of investor. So how does it work? Okay, so this is investor dashboard, sir. And you can see, so one investor has invested 25,50,000 rupees, and total interest or total rental they have received is 4.53 lakhs till now in 2 years. Okay, this is the asset, Avigna Warehouse 1. It is located at Hosur. So basically, it's an industrial belt near Karnataka and Tamil Nadu border. Property acquisition value was 51.92 CR and current value is 54 crore 37 CR. Okay,
warehouse. It was a warehouse, and transactions you can see. So February 13, 23 was the last rent payment, successful credit interest on CCD. And there are the rent receipts. So month on month आपका यहाँ पे पूरा transaction दिया हुआ है till from the starting, जब से उन्होंने उनके transaction, जब से उनका rent आना start हुआ है. So you can view one of the rent receipts here. You can see. So this is the SPV that was created to purchase the property. Investor name is Strata Property Management. So Strata has invested in that particular asset. And interest is January 23. Net income to the company. So this is the income of the SPV. So जो पूरा का पूरा जो rent आ रहा है tenant के through, that will be credited into SPV's account. And वहां से सारे investors को distribute होगा as per their share value. जितना भी उनका share percentage है. जिसने 25 डाला, किसी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 1 CR इन्वेस्ट किया, डिपेंड्स ऑन देम. 32,91,204 is a total rent, where base rent is 32,45,875 and interest on security deposit 45,329. So what is the gross income to the investor? So that is 18,271. That is complete inflow. And what are the outflows in that? So management fee 1062, property tax 250, net interest on CCD is 16,958. So this is the total rent, and the TDS is 1,656. On rent, 10% deduction of the TDS will be there. So 15,262 rupees is the interest or total payable amount in the bank. So ये आपका rent receipt हर महीने upload होता है जब जब rent आता है आपके account में. Here you can see. किसी महीने का हम निकाल सकते हैं यहाँ पे. You can check. फिर आते हैं documents part में. So TDS certificates यहाँ पे uploaded है, consolidated report, TDS, industrial opportunity second, E-zone opportunity, industrial opportunity 1, industrial opportunity 3. तो ये सारे TDS certificates है यहाँ पे. Documents की अगर बात करते हैं property के documents की, तो investment documents है, CV application form, consent letter for asset management agreement. Again, we will take a consent from all investors that the Strata is going to manage the asset on behalf of you. So consent letter होगा. Signature page, share certificate, that is the most important document for any investor. So this is the share and debenture certificate, CCD certificate. So government of Karnataka यहाँ पे है. First party is awareness, which is SPV, and second party Strata, मतलब investor, not Strata. And this is a share certificate. Property documents में आप क्या क्या, lease deed है, so that lease deed between the SPV and the tenant, NOC from government bodies, follow-up title report, sale deed between the landlord and the SPV, EDCR report, mortgage discharge receipt, land title, superimposed government order, construction agreement, valuation report की जिसकी मैं बात कर रहा था. So here you can see the valuation report of JLL का वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये. सो ये वैल्यूएशन रिपोर्ट हर 6 महीने में आपको मिलता है. प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है जैसे, एंड इस मार्केट का पूरा स्टडी है इस वैल्यूएशन रिपोर्ट. सेकंड वैल्यूएशन रिपोर्ट मार्च 22 में आई. अविग्ना वेयरहाउस और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉपर्टी का अटॉनमेंट एग्रीमेंट आपका हो गया. उसके बाद में एसपीवी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? सो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के GST registration certificate, PAN, asset management agreement, memorandum of association, certificate of incorporation, security subscription agreement. यहाँ पे होते हैं सारे investors के नाम. Security subscription agreement will be executed between the SPV and all the investors. So first party is SPV, second party is investors. तो यहाँ पे सारे investors के नाम आते हैं आपके schedule 1 में, जिसका share certificate आपको मिलता है. Here you can see किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सबके सिक्योरिटीज के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने शेयर्स हैं उनके, कितना वैल्यू है, कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने. सो यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स के नाम आएंगे. 183 और 73 इन्वेस्टर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एसेट. तो जितने जितना पैसा डाला है, तो 25 लाख में आपका डिवाइड हो रहा है 1090 के हिसाब से. सो 2500 और 22,500. One small question here, like I can invest it as my personal name itself, right?
No Yes. need to form a company, nothing. No, sir. You Because I can. saw Evernest was a company, but other than that, we can have it just in my name and as whatever that, because my PAN card is going to be given, right? So basically, I'll tell you, because I'm giving you a share certificate, right? So you Okay. will be part of that SPV only. We cannot, if you want to buy that entire asset in your name, you can buy that from the landlord, not through us. But you are investing 25 lakh or 50 lakhs or 1 CR. So however that amount is. So you just have to go through that process and you will be a part of that SPV. तो आप अपने खुद का नाम से करो या फैमिली में किसी के भी नाम से करो, it's up to you. Okay, fine. That's right. My investment portfolio, I thought how I'll have to do it. That's right. Yes. Right. Sir, what will be the minimum document to check if some client is asking that these are the documents should be checked? Sorry. What will be the minimum document for Minimum checking the document. property? आपका डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो आप? सर आपको ड्राइव नहीं, मिलती है हमारी तरफ से जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, फिर जो भी क्लाइंट आपसे मांगता है आप उनको वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आपको तो ड्राइव मिलती हर है। प्रॉपर्टी का तो अलग अलग होगा ना? हाँ सारी। हाँ। बेसिकली मैं गूगल ड्राइव शेयर कर देता हूँ पंकज जी आपको, ठीक है? वो अच्छा। गूगल ड्राइव में आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ में शेयर कर देते हो, ठीक है? हाँ, ठीक सर। Well, सर आपने कहा कि पहले हम शुरू में हम सीसीडी देते हैं ना, और शेयर सर्टिफिकेट फिर आप कब दे देंगे? मतलब सीसीडी के साथ में शेयर, मैंने 2 पार्ट में सिक्योरिटीज आपकी डिवाइड की है ना, इक्विटी में भी और सीसीडीज में भी। तो 1090 का रेशियो रखा हुआ है, जनरली 1090 का रेशियो है। 10% की मैंने इक्विटी दे दी कि आपको ओनरशिप मिल जाए, आपके शेयर मिल जाए आपको। 90% मैंने सीसीडी दे दिया आपको। अच्छा, और जब एसेट सेल करोगे तो 100% इक्विटी हो जाएगी क्या उसको? यस, बिकॉज सीसीडी इसीलिए रखा है ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, एनसीडी है नॉन कन्वर्टेबल, सीसीडी है कंपल्सरी कन्वर्टेबल। सो सीसीडी इसीलिए रखा है कि जब आप सेल कर रहे हो उस टाइम पे वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, थैंक यू सर। What is CCD, sir? CC is compulsory convertible debentures. These are kind of bonds which can be converted into shares after certain period of time. So suppose CCD से क्या होता है, उसका कूपन रेट होता है। एक कूपन रेट होता है जो प्रोपोर्शनेट होता है आपके रेंटल इनकम के। सपोज 10 रुपए, अगर एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ आपको, 10% की मैंने इक्विटी दी हुई है, 100 रुपीज आपने कहीं पे डाला है, इन्वेस्ट किया है, और आपको वहां पे 8 रुपए रेंट आ रहा है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने प्रपोर्शन उसका बनाया कि मैं 90% पे सेम रेंट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो उसका आपका कूपन रेट होगा 8.8% का 90 पे। सो दैट इज द सेम थिंग कि 100 रुपए पे 8 रुपए आ रहा है आपको, और 90 रुपए पे आपका थोड़ा कम आएगा उससे, मतलब उसके बराबर आएगा, और प्रोपोर्शनेट में उससे वैल्यू उसकी ज्यादा दिखेगी। सो बेसिकली सीसीडी रखे इसलिए गए हैं कि यहाँ पे आपका डबल टैक्सेशन अवॉइड कर सकें आप। यहाँ पे क्या होता है कि इनकम जो आ रही है ना आपको, वो 2 पार्ट कैसे आ रही है, जंप होके आ रही है। पहले एसपीवी में आ रही है और एसपीवी के बाद इन्वेस्टर के अकाउंट में आ रही है, तो 2 बार टैक्स ना भरना पड़े। दैट्स द रीजन हम लोगों ने उसको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको एक ही बार टैक्स भरना पड़े। बिकॉज जैसे एसपीवी के अकाउंट में आया पैसा, तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, राइट? और फिर एसपीवी के अकाउंट से इन्वेस्टर के अकाउंट में आ रहा हो, तो वहां पे भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो आप एसपीवी के ओनर्स तो आप लोग ही हो, तो 2 बार टैक्स क्यों भरना? टू अवॉइड दैट डबल टैक्सेशन वी आर ट्रीटिंग इट एज अ सीसीडी, एंड वो स्ट्रक्चर हम लोगों ने वैसा दे दिया उसको। लेकिन हमको जो रिटर्न मिलेगा वो तो पूरे अमाउंट पे मिलेगा ना रिटर्न, जो आपने 90% अमाउंट पे भी ही किया मिलता है था। आपको। मैंने जो आरओआई आपको कमिट किया पूरे अमाउंट पे ही मिल रहा है, वो तो मैंने खाली स्ट्रक्चर आपको चेंज किया है, ठीक है? बाकी अमाउंट तो आपको जितना आपको मैंने बोला है उतना ही अमाउंट मिल रहा है आपको। लेकिन वो आप 90% इंटरेस्ट और 10% डिविडेंड ऐसा नहीं दे सकते क्या आप? नहीं, मैं वैसा नहीं दे सकता, मैं आपको पूरा रेंट ही दे रहा हूँ, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हाँ वो तो समझ गया मैं, लेकिन पूरा आप बोले 90% सीसीडी 10% इक्विटी, तो मैं मैं 10% पे 99% सीसीडी, 1% भी इक्विटी कर सकता था, या फिर 45-55 भी हो जाता है। डिपेंड करता है एसपीवी का स्ट्रक्चर कैसे बना है, अलग अलग एसेट में अलग अलग होता है। जनरलाइज टर्म में मैंने बोला कि 1090 का रेशियो मैक्सिमम टाइम होता है कि मैंने इक्विटी आपको देनी है, बिकॉज आपकी ओनरशिप भी मुझे प्रूव करनी है, इक्विटी तो देना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ आपको। तो मैंने 10% एक वैल्यू फिक्स कर दी, 10% के मैंने इक्विटी शेयर दे दिए आपको, 2500 शेयर दे दिए, ठीक है? बचे 22,500 शेयर जो सीसीडी के हैं,
और हर शेयर वैल्यू जो एक शेयर वैल्यू है पर फेस वैल्यू जो शेयर की होगी वो 1000 रुपीज 100 रुपीज होगी. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है ना? एनीथिंग एल्स? सो मिस्टर अखिल, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, बहुत मजा आया स्टार्टिंग से लेकर अभी तक समझने में. आपने काफी चीजों को बहुत बारीकी से समझाया हम लोगों को. बट स्टिल आप में से किसी भी लोग को अगर कुछ भी पूछना है सर से, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाकी हमारे सेशंस तो सर होते रहते हैं, तो सबको बेसिक चीजें तो सबको पता ही है, बट स्टिल अगर कुछ चीज उनको समझ में नहीं आई फाइनेंशियल मॉडल में या फिर इन्वेस्टर्स डैशबोर्ड में, तो वो आप पूछ सकते हैं इनसे. यस, प्लीज लेट मी नो. इसमें रेफरल इनकम जो होता है क्या? रेफरल इनकम मतलब मैडम समझा नहीं आपकी बात में. अगर मैं इसका सेम प्रोसीजर किसी और को दे दूं, presentation, not presentation, if I ask somebody to invest in your company on my behalf, okay, so do you think that I will be Yeah, getting any commission I or can No I can show you referral that, program. Anuradha madam. We can Ah. discuss on that. I have a Okay. channel partnership. We can work on that. Okay, We can build a team. I'm working on that actually. sure, Okay, Asutosh is my actually from the mentors company. We have a mentor company also. So done, from sir. whom we are doing this. It's a good opportunity. I'll share it to you later. Sure, sir. If you are interested to work on it also, and because you wanted to invest on this, right? So I thought first you can see this. Sure, Investment purpose, the rental value is too good. So this is one thing which you can start off. sure, Right. sir. I'll discuss with you. Sure. We can plan on that. And there are a lot of things we can do together. Sure, sir. Yeah, right. Thank you. Mamta Chaudhary, less than 25 lakhs. So मैम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 25 lakhs. कोई एसेट आता है जो हमारे पास में 30 करोड़ 35 करोड़ का एसेट होता है एंड वी हैव स्लॉट, सपोज 15 लाख के स्लॉट आता है फीमेल स्लॉट. तो इफ वी लॉन्च दैट काइंड ऑफ एसेट तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो कि हमारे पास कम वैल्यू का आया है कि नहीं आया. 15 lakhs का भी आता है कभी कभी, और दैट विल बी ओनली फॉर फर्स्ट टाइम फीमेल इन्वेस्टर्स. प्रोजेक्ट कब तक आ जाएगा सर? विद इन अ वीक वी आर एक्सपेक्टिंग, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए. उसका ड्यू डिलिजेंस जयपुर का प्रोजेक्ट आ रहा है? हाँ जी, जयपुर का प्रोजेक्ट? जयपुर. जयपुर का जयपुर की प्रोजेक्ट? बात, हाँ जयपुर की ही बात कर रहा हूँ. सो विद वेयर इन हाउस का? हाँ वेयर हाउस, तो विद इन अ वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका ड्यू डिलिजेंस खत्म हो जाए और हम लोग उसे प्लेटफॉर्म पे अपने लॉन्च कर दें. ओके सर, थैंक यू. Yeah, one good thing I see about this is like, being with this platform, we can invest in property across the country without any fear. Anytime. So anywhere we can invest, be a part of the growing industry, because wherever the growth is there, Strata is going to pitch on that. Exactly. So It's a good that is the platform. so see, so आज की रेट में sir, if I talk about the commercial real estate, you go to you name a developer and you go to a developer, you buy a property, you don't get good returns because you are buying a property of 1000 square feet or maybe 500 square feet, 700 square feet. Do you get tier 1 tenant in that property? The answer is no. So again, the same rent you are not getting, right? So in fact, I have an apartment which is actually in a prime location in Bangalore, but still my property assessment assess value can go up to around 1.2 crores. Right. But my rental income is only 30,000 per month. That I know, sir, and I am completely Very less. understand that thing because it is not more than 2.5%. Yeah. But whereas if I see the same thing, I put it to 4 pieces of investment here, 25 lakhs for 1 crore. Right. I'm looking at almost 60 to 70,000 rupees rental. more right. than that. Right. No doubt, sir. And capital appreciation is also going to be good. Yes. True. Okay. So I think queries तो किसी की कुछ है नहीं, so हमको आज सेशन को वाइंड अप करते हैं सर. एंड नेक्स्ट संडे हम लोग आई होप मिलते हैं, तो नए एसेट के साथ हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, सो हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बैठाएंगे और जो भी अपडेट्स होंगे. Definitely. So thank you so much, Akhil ji. Thank you so much everyone. Thank you, Ashutosh. Yeah. Session. हाँ, yeah. बाकी कल मिलेंगे दोबारा से हम लोग, जो हमारा सेशन होगा उसमें. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Hello. Okay. Yes.
Hello. Yes, sir. Sir, Please, can sir. you hear me? Yeah. Any project in Bangalore, sir? I'm actually belongs to Bangalore only. We will be coming up with the asset in Bangalore also, but not in this financial year. Maybe 23 after March, we will be coming up with the asset in Bangalore. We are evaluating something in good in Bangalore as well. If I can work on that, shall I project and whom should I contact to? Asutoshji, I can talk to you. You And Yeah, you can talk contact to me. Ashutoshji anytime. Not yeah, a problem. we are a team in that place anyway. Asutosh is helping me a lot in that. Yeah. So we'll work on it. By any projection of new properties, we can pitch in. We will Go ahead. definitely let you know, sir. If Yeah, something because is I do come across a lot of properties for sale, and big properties selling is a major task which cannot happen so easily. right. This investment will platform will attract at least. That's true. Right. Okay. Okay. Yeah. Thank you so Okay, much. Thank you so much, Akhilji. Thank you so much, Ashutoshji. Bye Have a bye. good day. Thank you, Akhil. Thanks a lot. Thank you.